Dear student, I am going to start type of organic reactions. Number 1, substitution reactions. CH3 Br, bromomethane or methyl bromide react with potassium hydroxide in aqueous media. When methyl bromide react with potassium hydroxide in aqueous media, Br bromide displays are substituted by the hydroxyl or alcoholic functional group and formation of methyl alcohol or methanol and potassium bromide. In this given example, bromide displays are substituted by the alcoholic functional group. Then this reaction is called substitution reactions. What is the means of the substitution reactions? During the chemical reactivity, if the atom or group of the atom of reacting species substituted by the atom or group of the atom is called substitution reactions. In example, methyl bromide having halide functional group. When it reacts potassium hydroxide in aqueous media, the bromide displaced by the OH alcoholic functional group. In this given example, potassium hydroxide ionic compound in water, it ionizes in a potassium and hydroxide ions. Hydroxide is a nucleophilic reagent. Then these reactions progress in the presence of nucleophile hydroxide ions. When methyl bromide react with potassium hydroxide, OH nucleophile substituted bromide of methyl bromide. Then this reaction is called nucleophilic substitution reactions. यदि सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के द्वारा होता है तब उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सेकंड एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. एग्जांपल, benzene having 6 hydrogen. All hydrogen is similar. When it reacts, nitric acid concentrate in the presence of concentrate H2SO4. Hydrogen of benzene displaced by the electrophile nitronium ions. Then this reaction is called electrophilic substitution reactions, because hydrogen of benzene displaced by the electrophile nitronium ions and Y product is a H2O. It means this is an example of electrophilic substitution reactions. Third is CH4 methane react with chlorine. CH4 saturated hydrocarbon, first member is a methane. When it reacts chlorine, the chlorine molecules break down in a heterolytic pattern in the presence of sunlight and formation of two free radical of chlorine atom. Hydrogen of methane displaced by the chlorine free radical. It means the given example is hydrogen
displays are substituted by the chlorine free radical, then this reaction is called free radical substitution reactions. And Y product is here HCl. It means overall the substitution reactions means the atom or group of the atom of reacting species substituted by the atom or group of the atom is called substitution reactions. The overall substitution reactions classified three categories: nucleophilic substitution reactions, electrophilic substitution reactions, and also free radical substitution reactions. Second type is addition reactions. Addition reaction. We explain of this addition reactions by this simple example. Ethene CH2 double bond CH2. This is the example of unsaturated hydrocarbon alkene series. First member is the ethene. Ethene react with hydrogen in the presence of the nickel. Unsaturated bond change into saturated compound or saturated alkane series hydrocarbon, and hydrogen molecules add with ethene, and ethene convert in a ethane in the presence of nickel. Two reactant react and form only one product. This is called addition reactions. Example second, how can you identify this hydrocarbon is a saturated or unsaturated? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. हम कैसे पता लगाएंगे जो हाइड्रोकार्बन हमको दिया गया है वह सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? इफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड पास इन अ bromine liquid, bromine is a reddish brown color liquid. Bromine is reddish brown color liquid. If given organic compound supply in a added in a bromine, if bromine is a change reddish brown color to colorless, यदि उसका रेडिश ब्राउन कलर था वो चला जाए कलरलेस हो जाए, इट मीन्स गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिश ब्राउन कलर जैसे समाप्त हो जाएगा हम समझ जाएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया गया है उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, एल्कीन और एल्काइन, एंड प्रोडक्ट हियर इज 1,2 फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन 1,2 डाई ब्रोमो एथेन. Next example is carbonyl functional group classified in various type functional group aldehyde and ketone. Here is the example is CH3CHO. This is the acetaldehyde or IUPAC nomenclature according ethanol. Ethanol react with second reactant hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide is a covalent compound that required is some basic media for the ionization of the H single bond C, and during the chemical reactivity between acetaldehyde and hydrogen cyanide, the pi bond of shifting from carbon to oxygen and CN added with carbon of carbonyl and H added with oxygen of carbonyl group and formation of this compound. The name of this compound is 1,2,3 2-hydroxy propanitrile. 1,2,3 2-hydroxy propanitrile. During the chemical reactivity, the two reactants combine and form only one product. This reaction is called
nucleophilic addition reactions. This reaction is called nucleophilic addition reactions. Second is CH3 CH double bond CH2. Propene is also containing unsaturated bond. It reacts with HBr or HCl. During the chemical reactivity, HCl or HBr is a covalent molecules. You also know HCl or HBr polar covalent molecules. Why? Because chlorine is a more electronegative compared to hydrogen. Then sharing electron pair between hydrogen and chlorine shifting from hydrogen to Cl. Then Cl carries a slight negative charge and hydrogen carries a slight positive charge. Similar process in HBr. Vr is a negative and H is a positive. When HBr reacting species added with propene molecules, the negative part attached with carbon bonded to unsaturated bond and also having minimum number of hydrogen. During the addition of HBr on propene, negative part of attacking HBr reagent attack and attach which carbon bonded to multiple bond and carry lesser number of hydrogen. Then formation of secondary compound and positive part of attacking reagent attack and attach which carbon bonded to multiple bond and also having more number of hydrogen. Then formation of 2-bromo first, second, third, 2-bromo-propane. Then this reaction is type addition reactions. Next example is CH3 C CH2 and CH. Propene react with HBr. HBr is a polar molecules. Vr carries slight negative charge and hydrogen carries slight positive charge. In the presence of the benzoyl peroxide, it means effect of peroxide. Negative part of attacking reagent attack and attach which carbon carry is more number of hydrogen, and positive part of attacking reagent attack and attach which carbon bonded to multiple bond and also having less number of hydrogen. Again, the positive part of attacking reagent attack and attach which carbon bonded to multiple bond and carry lesser number of hydrogen. Then formation of, what is the location of bromide? On first carbon. Then formation of primary halide. Name of this compound is 1-bromopropane. And this reactions progress by the free radical. Then this is a free radical addition reactions, and this reactions progress by the electrophile. That this is called electrophilic addition reactions. And what reactions with the HBr? With propene. One reactions, absence of the peroxide, formation of 2-bromopropane. Next is propene react with the HBr attacking reagent in the presence of the peroxide. In the presence of the peroxide, bromine attach with terminal carbon. When bromine attach with terminal carbon, then formation of 1-bromopropane. It means what reactions are different. One is called
This reaction is called according Markovnikov rule. Second is the just opposite is called anti-Markovnikov rule or peroxide effect. In the next lecture, जब next lecture लेंगे तो हम दोनों effect को अलग अलग करके समझाएंगे आपको, ठीक है ना बेटा। तो one is the nucleophilic addition reaction, second electrophilic addition reactions, next is the free radical electrophilic addition reactions. Third type is elimination reactions. Before elimination reactions हम लोग समझेंगे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, नेक्स्ट इज द बीटा, नेक्स्ट इज द गामा। द कार्बन विच अटैच टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, नेक्स्ट इज द बीटा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, गामा। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल, R is the alkyl, 2 alkyl, 1 hydrogen and 1 chlorine. हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। एक एक लाइन को इसको समझना है। When hydrogen eliminate or remove in the form of the positive or proton, then इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का था, वो एक हाइड्रोजन से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक हाइड्रोजन से आया, देन दिस कार्बन इज कैरी नेगेटिव चार्ज। सेकंड स्टेप, इफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, देखो जो भी हम देख रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। During the any reactions of the requirement, hydrogen eliminate in the form of protons, leaving of electrons pair on the carbon, छोड़ के चलाया। This carbon bonded with the chlorine and chlorine remove or eliminate in the form of Cl negative ions. Cl के आउटर सेल में आपको मालूम है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा तो Cl पे कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। दिस Cl कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग हियर, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर था, नेगेटिव चार्ज भी था। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो दिस कार्बन कैरीज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टेड आउटर सेल, 2, 4 एंड 6। दिस इज कॉल्ड कार्बीन। ये क्या है, कार्बीन है। फिर से समझते हैं, ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द देखो जो भी चेंजिंग होती है वो रिक्वायरमेंट पे होती है। ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, हाइड्रोजन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटॉन, लीविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑन द कार्बन। क्लोरीन भी इस बॉन्ड को ब्रेक करके निकला, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का। अब आगे चलते हैं, दिस कार्बन बॉन्डेड विथ क्लोरीन, देन दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। व्हाट इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस? Atom are group of atom. Atom are group of the atom. Eliminate. Atom are group of the element. Atom are group of the atom. Eliminate within a reacting molecules. It's called elimination reaction. जब किसी reacting molecule से atom या group of atom निकल जाए तो उसको क्या नाम देंगे? Elimination reactions. Atom or group of the atom remove or eliminate किससे? Within reacting species. Atom or group of the atom removed by the reacting species is called elimination reactions. And here hydrogen and chlorine removed by the alpha carbon, then this is called alpha elimination reactions.
This is called alpha elimination reactions. Atom or group of the atom remove or eliminate by the only reacting species. If atom or group of the atom eliminate by the alpha carbon, then it's called alpha elimination reactions. Second is beta elimination reactions. Beta elimination reactions. Second example, 1-bromopropane reactions with KOH. मीडिया इज एल्कोलिक. देखिए वहां एकस मीडिया था, यहां हमने कौन सा लिया? एल्कोलिक मीडिया. 1-bromopropane रिएक्ट विथ KOH इन एल्कोलिक मीडिया. थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको. अल्फा कार्बन, नेक्स्ट इज बीटा कार्बन. व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ दिस कार्बन. जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं. ठीक है, तो यहां से ब्रोमीन निकला और यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन. देखिए के वी आर, KBr, OH and H2O, hydrogen and halogen removed by the only 1-bromopropane molecules. Then this reaction is called beta dehydrogen. Halogen है ना, ये हाइड्रोजन है हैलोजन. बीटा dehydrohalogenation reactions. H निकल गया and Br निकल गया. Then formation of propene. Formation of propene, and this reactions is called beta elimination reactions or beta dehydrohalogenation reactions. Beta elimination or beta dehydrohalogenation reactions. Why is called elimination reactions? Because hydrogen and halogen removed by the element by the 1-bromopropane. Then this reaction is called elimination reactions, beta elimination reactions or beta dehydrohalogenation reactions. Next example is alpha beta. Next is the gamma. 1, 2, 3. Name of this organic compound is 1, 2, 3. 1,3 dash dibromo. Total 3 carbon. Then propane react with zinc dust. Alpha, beta, next is a gamma. Hydrogen removed by halogen removed by alpha and gamma carbon. Then this reaction is called gamma elimination reaction, and formation of alicyclic compound is called cyclopropene. Cyclopropene, and Y product here is zinc bromide. It means elimination classified 3 categories: alpha, beta and gamma. Fourth number is condensation reactions. CH3 COH. Acetaldehyde or ethanol. Second molecules H CH3 COH, also ethanol molecules.
This carbon is alpha carbon. Why it's called alpha carbon? Because this carbon attached with aldehyde functional group, then this carbon is called alpha carbon. And this hydrogen is called alpha hydrogen. It means alpha carbon bonded with 1, 2, 3 alpha hydrogen. Alpha hydrogen always acidic in nature. In the presence of basic media, sodium hydroxide, carbonyl group CO, this carbon bonded with oxygen through double bond. One is a sigma, second is a pi. Oxygen more electronegative compared to carbon. Then electron pair shifting from carbon to oxygen. Pi electrons cloud shifting from carbon to oxygen. And this hydrogen bonded with O and formation of OH. देखिए एक बैलेंस फ्री हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। थोड़ा सा लाइन को समझा दे रहे हैं आपको। ये कार्बन जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के ऊपर जाएंगे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड, ये कार्बन था, चलिए इस कार्बन को बना दे रहे हैं, इससे हाइड्रोजन निकलेगा, निकाल दिया। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा? पॉजिटिव फॉर्म में निकलता है, एसिडिक का अल्फा, हाइड्रोजन ऑलवेज इज एसिडिक। तो यहां पर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स पेयर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में निकला ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन दे के निकला होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो दोनों कार्बन मिलकर क्या करेंगे? एक बॉन्ड को बना लेंगे। नेक्स्ट, इससे दो कोई हाइड्रोजन अटैच है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है। देख लीजिए यहां पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जरा गौर से देखिएगा। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, यहां पर आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं इसको? एल्डोल। क्यों एल्डोल कहते हैं? बिकॉज दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 फंक्शनल ग्रुप, 1 एल्डिहाइड, सेकंड इज एल्कोहल। तो एल्डिहाइड के लिए ALD हो गया और एल्कोहल का सफिक्स क्या है? ऑल, देन एल्डोल। देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। व्हेन, इसको आपने थोड़ा सा हीट कर दिया, चलो इसका नाम देखते हैं क्या होगा। क्या नाम होगा भाई? 1 2 3 4 लिख दें, 1 2 3 4। थर्ड नंबर से क्या अटैच है? हाइड्रोक्सिल एल्कोहलिक ग्रुप। 3 हाइड्रोक्सी, टोटल नंबर कार्बन इज 4, ब्यूटेन, ब्यूट, वर्ड रूट AN, ANE का E रिप्लेस कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? अल, ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हीटेड। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स इज एलिमिनेटेड, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए यहां से OH निकल गया, यहां से H निकल गया, एक एक बैलेंस से फ्री होगी, डबल बॉन्ड आ गया। ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। The name of this organic compound is 1 2 3 4. After second carbon, this having double bond. 4 but dash 2 dash ene, E replaced by the al, enal. The name of this compound is but dash 2 enal, and this reaction is called aldol condensation reactions. What is the condensation reactions? The two reactant react and form is a compound. When it is a heated earth, it eliminate or
release water molecules and form is the organic compound or product, then this reaction is called condensation reactions. Example, two molecules of ethanol or acetaldehyde react in the presence of the basic media and formation of aldol. Name of this compound is 3-hydroxybutanol. When 3-hydroxybutanol is heated, it remove or eliminate water molecules and formation of but-2-enol. Fifth number, rearrangement reactions. 1, 2, 3, 4. Butane, normal butane. Normal butane in the presence of anhydrous AlCl3. Change in isobutane. During the chemical reactions, if reacting species or reactant change into isomer form, or during the chemical reactivity only rearrangement of atom or group of the atom is called rearrangement reactions. During the chemical reactivity, if only rearrangement of atom or group of the atom is called rearrangement reactions. In given example, normal butane in the presence of the AlCl3 rearrange in the form of isobutane. Next example, 1, 2, 3, 4. The name of this compound is but-1-ene. In the presence of acid, means this reactions acid catalyzed reactions. 1, 2, 3, 4. Formation of but-2-ene. Change of the position of double bond. And this reaction is called rearrangement reactions. During the chemical reactivity, only rearrangement of the atom or group of the atom is called rearrangement reactions. Last type of organic reactions is isomerization reactions. CH3, C, double bond, C, CH3. First, second, third, fourth. Name of this organic compound is similar group of atom or atom opposite side or anti side. This is called transform. The name of this compound is trans-but-2-ene. In the presence of the sunlight, it change into another isomer form, and this isomer form similar group or group of the atom same side, HH, CH3, and this is called cis form of geometrical isomerism. The name of this compound is cis-but-2-ene. During the chemical reactivity, if one isomers can be changed, another isomers, example trans-but-2-ene, during the chemical reactivity, change in another isomers cis-but-2-ene. This reaction is called isomerization reactions. This reaction similar to almost is a rearrangement reactions. One isomers can be changed, another isomers, then this type reaction is called isomerization reactions. Thank you.